Hello viewer. Let's take a start from respiratory cycle. You know better. We have already discussed about the respiratory system, that what are the different parts of respiratory system. So uh, look at the different sketch. So this one is diaphragm, and the second one, and this is the third one. So in first one you can see the diaphragm is in a relaxed state, while in the second one there is inspiration occur, while in the third one there is expiration. So what will be happens? Now look at here, there is no air movement here. And the relaxed state, the external intercostal muscles and the diaphragm, that is already in relaxed moods. Neither the air goes enters or outside. Now in second state you can see there is inspiration occur. So in inspiration the oxygen or air flow, so the oxygens can directly goes inside your lungs. So what will be happens during inspiration? So the airflow inside. So after entering of the air and oxygen, so the ribs move upward and outward due to muscle contractions. So it means that during intaking of oxygens, the ribs move upward, and due to the muscle contraction occurs. So when your muscles become contracts, so the ribs will move upward, and consequently the lungs volume increases and causing air pressure to fall. So after that, another phenomena in mechanism is that the diaphragm contracts and flattens, moving downward. So this is the a very simple mechanism that how the air intake occur, and then the ribs move upward and the muscles become contract, while the lungs volume capacity increases due to air causing air pressure, which is fall. So the diaphragms contracts and it flattens, moving downward. So look at the position of the diaphragm. And the third one, in expirations, the airflow outside mean the carbon dioxide gas is released. So when the airflow outside, so what will be happens with the ribs? So the ribs return to the resting position from the as it was in the normal state like this. So I think you will see no difference between this one and this one. Okay? So the airflow outside, so as a result of or consequently the lung volume decreases and causing air pressure to rise, and the diaphragm become relaxes. तो स्पेशली ये रिस्पायरेटरी साइकिल है, और रिस्पायरेटरी साइकिल में ये तीन फिगर्स जो आपको नज़र आ रहा है, इसमें आपको आपको एक रिलैक्स स्टेट नज़र आ, दूसरा जो है उसमें इंस्पायरेशन है, और सेकंड एक्सपायरेशन है। तो बिल्कुल जी रिलैक्स स्टेट में आप देखें देयर इज़ नो एयर मोमेंट, ठीक है। तो एयर मोमेंट बिल्कुल नहीं है, ना ऑक्सीजन अंदर दाखिल हो गया है। तो स्पेशली आप देख सकते हैं कि आपके जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स हैं, ठीक है, वो रेस्ट पोजीशन पे है, और इसके अलावा डायफ्राम भी रेस्ट पोजीशन पे। तो फिर सेकंड जो आपको जो फिगर नज़र आ रहा है, इसमें इंस्पायरेशन होता है, ठीक है। तो इंस्पायरेशन जिस तरह मैंने आपको कहा था कि ऑक्सीजन को इनटेक करना, एयर फ्लो इनसाइड, तो आपके जो रिब्स हैं, ठीक है, रिब्स विल मूव अपवर्ड, आपके रिब्स जो है वो ऊपर जाएंगे, एंड आउटवर्ड ड्यू टू मसल कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि आपके जो मसल्स हैं, मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान योर रिब्स जो है वो आपकी जो पिछलियाँ हैं वो ऊपर जाएंगे, ठीक है। सो द लंग्स वॉल्यूम इंक्रीजेस एंड कॉजिंग एयर प्रेशर टू फॉल, और लंग वॉल्यूम कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। इसके अलावा आपका डायफ्राम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, और कॉन्ट्रैक्शन से इट विल मूविंग डाउनवर्ड। इसी तरह एक्सपायरेशन में ये होता है कि एयर फ्लो जो है वो आउटसाइड होता है, मतलब इनटेक ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करना, ऑक्सीजन को इनटेक करना, ठीक है। इसको इसको क्या कह सकते हैं,
सिंपल, दिस इज कॉल्ड एक्सचेंज ऑफ गैसेस या रिस्पायरेशन, ब्रीथिंग में जिस तरह होता है। तो एयर जो है वो अंदर गया है, ठीक है। सो व्हाट विल बी हैपन, द रेब्स रिटर्न टू द रेस्टिंग पोजीशन, आपके जो रेब्स दैट विल कम इनटू द रेस्टिंग पोजीशन, while the lungs volume decrease. Lungs volume decrease because the carbon dioxide gas on the air become rush out from inside environment and causing air pressure to rise, और air pressure जो है वो क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। सेकंड जो है आपके जो डायफ्राम है वो रिलैक्स हो जाएगी। तो कहने का मकसद है कि इंस्पिरेशन में कॉन्ट्रैक्शन होता है और एक्सपायरेशन में रिलैक्सेशन होता है, क्योंकि एक्सपायरेशन में हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम रिलीज करते हैं, ठीक है। Okay, so another condition is you can see the breathing in from this figure. You can see here that has been taken from Encyclopedia Britannica. So during breathing in, the chest become expands. Look at the position of the ribs, and this one is the diaphragm, and it means that during breathing in, when the oxygen uh, go inside, so the diaphragm become contracts and the chest will be also become expand and the ribs move outwards, and look at the position of the diaphragm. So it will be seems like this. While in breathing out, the chest contraction occurs, the chest had become contract, and then this is the position of the lungs because the carbon dioxide is already released. The air become go outside, and this one is the diaphragm. So the diaphragm it become relaxes. These are the diaphragms. So when the diaphragm become relaxes and the chest contraction occurs, so the carbon dioxide gas will be released, and you will see the two figures. So in one figure you can see the oxygen is inhaled, while in second figure the oxygen is in exhale, mean the carbon dioxide gas is released. Now come to our inspiratory reserve volume. So inshallah we will discuss these terms in my next lecture. So thank you so much for watching my lecture.